ऑलराइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है उदिशा और मेरे साथ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं हमारे एस्टीम्ड और एक्सपीरियंस्ड पैनलिस्ट, जो कि इस बार के सारे इंटरव्यूज में आप लोगों को 1-on-1 गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरी कि प्लीज जब आपके पास टाइम होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी का, तो उसको ये सोच करके वेस्ट मत किया करिए कि अभी तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अभी तो मेंस का रिजल्ट आ जाए, अरे फिर इंटरव्यू की डेट आ जाए। And trust me, while we are procrastinating like this, a lot of important details that we could probably learn and maybe ingrain in ourselves, वो अच्छी आदतें जो हम सीख करके अपना हिस्सा बना सकते हैं, फाइनली एक इंटरव्यू को बहुत ही शांति से एक्चुअली नेल कर सकते हैं। उसको हम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना देते हैं क्योंकि हम हर चीज को आखिरी के 4 दिन या 1 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। हाय शिखा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी लाइव राइट नाउ, एक बार दोस्तों सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारे पैनलिस्ट्स की सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन पहुंच सके। तो वेलकम आवर पैनलिस्ट्स, गुड आफ्टरनून टू ईच वन ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर, हमारा जो आज का डिस्कशन है, जैसा कि आप लोग से अभी डिस्कस हो रहा था, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और जनरल अवेयरनेस। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार सबसे पहले आप लोगों को क्या लगता है कि ये 2 चीजों का कितना वेटेज होता है किसी भी इंटरव्यू के अंदर? अगर हम बैंक एग्जाम की बात करें तो उसके अंदर ये 2 चीजों का कितना वेटेज होता है? सर प्लीज आंसर। Students, warm welcome to all of you. Interview is basically to judge your suitability for that organization. तो आपका पोटेंशियल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका अवेयरनेस, ये सारा कुछ जज होगा। और इसमें जितना ज्यादा आप क्लियरली और स्मूथली सामने आएंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल इज फंडामेंटल। यू हैव टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू कन्वे द आंसर्स इन ए वेरी सिस्टमैटिक मैनर, स्टडीली एंड कंसिस्टेंटली, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो दैट इज द फर्स्ट point of communication. First, we have to understand what is the question, take a few seconds, and then answer the questions very specifically and pinpointedly. और general awareness आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि as a banker, you will be dealing with the customers and you will be dealing with the industry and businessmen of all kinds. तो एक general awareness आपको बिल्कुल रखना है apart from the banking scenario. Thank you. Right, sir. And yes, sir. Friends, welcome all of you. As the Khurana sir has said, interview is the most important part of the whole selection process. जैसे मैं आपको हिंदी में बताऊं तो आपने रिटर्न क्लियर कर लिया, मेरिट में आपका नाम भी आ गया, नंबर भी आ गए। अब इंटरव्यू के 20 से 30 नंबर मार्क्स इंटरव्यू के रहते हैं, उसको उतना ही वेटेज देना बहुत जरूरी है क्योंकि 5 में से 1 ही बच्चा सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू के लिए पूरा स्ट्रेस आपको जो स्टार्टिंग करना होता है वहां पे कम्युनिकेशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो बी ब्रीफ इन दैट। आपका नाम, अपने पिछला कोई एक्सपीरियंस है और क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, इतना ही वहां पे बोलना है। और उसके बाद वो पूछेंगे कहाँ बिलोंग करते हो, किस स्टेट में है, किस सिटी में है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए आपको, उसका अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जो कोर्स आपने किया है उसके लिए प्राइमरी नॉलेज, अगर कॉमर्स ग्रेजुएट है, साइंस ग्रेजुएट है, बीटेक किया है, जो बेसिक आपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, उसका थोड़ा करना, वो क्लियरली आपको कन्वे करना है उस चीज को, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उसके लिए। और किसी भी भाषा में आप वहाँ पे इंटरव्यू दें, हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, जो जिस भी भाषा में आप, ये क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, ये आपका कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं अपनी चीज को, आप उसको बताने का, उसका कैपेबिलिटी का असेस किया जाएगा वहां पे। इसके साथ ही जनरल अवेयरनेस नॉन पॉलिटिकल जनरल अवेयरनेस, और उसके साथ में बैंकिंग की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। So please carry on. I was just writing your point. It's important. जनरल अवेयरनेस जो कि प्राइमरी इंपोर्टेंस, नेशनल इंपोर्टेंस की चीजें हैं, या अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां का कोई स्टेट फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, कोई अगर कोई फेस्टिवल उन दिनों में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी। जैसे नेशनल लेवल पे आजकल G20 कॉन्फ्रेंस एक चल रहा है, या आरबीआई ने इकोनॉमिक सीनियर में देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस किया 2 दिन पहले,
तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो ये मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया ने अनाउंस किया इन रिटेलिएशन टू दी यूएस फेडरल रिजर्व पॉलिसी, उसके बाद हमें थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए। तो इसमें आप और नया करेंसी आरबीआई ने लॉन्च किया डिजिटल करेंसी, उसमें थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए उसको आपको। आपके आंसर्स बिल्कुल ब्रीफ में होने चाहिए। जो कोई अगर आता भी है तो ये नहीं कि आपने बहुत एलाबोरेट करके उसको 10 मिनट उस पर ही आप बोलते रहे। उसमें जितना पूछा जाए, बी कम्युनिकेशन स्किल में पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप यू शुड बी पेशेंट लिसनर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जितना पूछा गया है उतना ही आपने आंसर देना है। Right, sir. And over to Pranab, sir. So, right. Good afternoon, friends. As Mr. Saigal and others, they have already clarified to you, this interview plays a very decisive role in determining your ultimate selection. So what kind of competitive advantage you carry over your counterparts, that probably matters a lot. An interview is definitely going to play a very vital role because all of you have, this is a very highly, as I have told you, that it is a fiercely competitive exam. And it's a process of elimination only. So there are very remote prospects that 1 out of 5 will get selected. So you can imagine the intensity of the relevance of the interview process in a banking exam. And in any interview process, like all other organizations, and particularly in a service sector like banks, this is very important, that how you communicate. If you tell me that I think 80% of the interview, it depends on your the effectiveness with which you communicate to the people. And when you talk of communication, so there are not many things I have seen that people, because of some inherent fears, some kind of phobia they carry, some kind of psychological barriers they have, even if they know so many things, they are not in a position to communicate effectively. So however knowledgeable you may be in your area, if you do not communicate the way you should have communicated, you do not communicate with clarity, conviction and confidence, then it is all meaningless. And naturally it has got an adverse impact on your interview. So that's why communication is very, very important. And when I talk of communication, I find that there are sometimes communication gaps, communication, what in a technical language we call communication blockage. Communication blockage is that you must understand the type of questions which are being posed to you. You must listen to the interviewer properly and try to connect with him, and you must know what he expects, what kind of answers he is expecting from you. I have seen that people, they mostly go with a pre-scripted answer. They cram up certain things, and some of the questions they are being asked, they do not confine themselves, restrict themselves to the ambit of the question, and they go here and there. So that carries a very bad impression, adverse impression as far as communication is concerned. So you must understand the people and understand their psychology also, what kind of answers they are expecting of you. So, and plus you should be in a position to predict the writing on the wall. As particularly in the context of this general awareness, I say that people, you need to be intimately connected with the newspaper. Newspaper based होना चाहिए आप लोगों को, and you I think before you appear any kind of interview in a banking setup particularly, that you have to keep abreast of at least 3, 4 or 5 months newspapers. Although as far as the news are concerned, broadly you can divide into financial news and non-financial news. But although you find that your financial sector news, any type of like there is a change in repo rate, or there is a what you call introduction of digital currency, your GDP, your inflation, these things are naturally relevant. But apart from that also, it is not that you lose sight of other things also, other developments also. You have to keep yourself abreast of the latest developments taking place in the realm of even, I don't say that not many questions are asked on political things, but sometimes also they ask. So national and international news,
like your Ukraine war or NATO or G20 summit, your budget, all these things you are also supposed to know. So Right, that sir. you have to, I advise all of you to scrupulously read at least newspapers, minimum for 2 hours every day. This is my suggestion to you. And I wish you all the best, and we'll discuss as per your. Right. And now I'd request Vinod sir to kindly share some of his pointers in concern of only general awareness. If I ask you, sir, what are your pointers that the student should follow? First of all, I would like to just touch some points on communication, which is not discussed. Communication skill. Here is not a question of communication. It is a skill required at the time of interview, how to present your knowledge. Because you carry so much information with you, you are a knowledgeable person, but how the panelist will know about. So that you should understand and reply in such a way that it gives a good impression about your knowledge part of it. And in it, it is required to update on your subject first, about your location related information you must carry, the area you belong to. You must know what are the main areas of which can be conveyed at the time of interview. That matters a lot. Particularly subject related, you must be very thorough. And you should reply in such a way that you can drive your interview to the strong point you already have. As regards general awareness is required about economy, about banking sector, particularly which sectors government wants to promote and all. And as you are appearing for PO, so you must reflect by your answer the way how you would like to lead your team, because you are in officer category you are appearing for. So you must reflect your leadership quality, and you must pay attention when you are preparing for interview, how you can answer so that it shows your leadership quality also. Right, sir. So I guess you're done with your pointer here, sir. Yeah. Right. So students, as you very clearly heard all our panelists repeat a few pointers, and of course उन्होंने अलग-अलग काफी सारी बातें भी आपको बताई हैं, बट कुछ चीजें हैं जिन पर उन्होंने काफी ज्यादा एम्फेसिस डाला है यहाँ पर. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी चीजें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं, आप अपने आप को उनके साथ अलाइन करने की कोशिश करें. आप लोगों को ये बता दूं मैं कि आपके जो 1-on-1 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप पूछते हैं इंट्रोडक्शन में हमारा क्या सीक्वेंस होना चाहिए, हाउ शुड वी गो अबाउट द इंटरव्यू, तो आपको ये बता दूं कि दोस्तों हमारा पूरा का पूरा पैनल आप लोगों को मिलेगा आपके इंटरव्यू बैच में, जो कि IBPS PO का डेडिकेटेड इंटरव्यू बैच होगा. आप अपना एक एक क्वेश्चन वहां पर अपने एक एक मेंटोर से पूछ सकते हैं. सारे हमारे पैनलिस्ट उस बैच का हिस्सा हैं और उनका ही एक्सपीरियंस आप लोगों को आपके इस इंटरव्यू को और स्मूथ बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है. यहाँ पर देखिए हमने ज्यादातर बातों को तो कवर कर लिया है, बट अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कम्युनिकेशन पार्ट की, तो कम्युनिकेशन को हमेशा से दो तरह से देखा जाता है. वन इज वर्बल, अनदर इज नॉन वर्बल. बहुत सारी बातें हम लोग बोल करके तो एक्सप्रेस कर देते हैं, बट देन वी कम टू द नॉन वर्बल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन, जहां पर हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है. और अब हमारा जो लास्ट पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं, मैं अपने पैनलिस्ट से विनोद सर से एक बार स्टार्ट करते हैं. सर एक बार ब्रीफ में बताइएगा कि नॉन वर्बल यानी कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो हम कम्युनिकेट करते हैं, उस टाइम पर स्टूडेंट्स का किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज या प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट होगा, एंड देन वी विल कीप गोइंग टू द रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट्स. सबसे पहले जैसा कि मैम ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज दैट मैटर्स अ लॉट. द मोमेंट यू अपीयर बिफोर द इंटरव्यू कमेटी, तो फर्स्ट लुक योर लुक मैटर्स. द मोमेंट यू एंटर, हाउ यू हैव ड्रेस्ड अप, how you carry yourself, how you reach to the panel, and how you greet them. It all starts and
make some impression on the panelist. Plus, when you reply to your questions, so how you reply, that matters. Sometimes we have learned something, we have memorized that, and we reply. They are experienced people, they understand whether it is your thought or you have just read and you are just trying to impress them. So you practice in such a way that it should come before them as if it is your own thought. It gives weightage. And moreover, it is required that a genuine educated person should know. Up to that extent only they expect. There is no much expectation from you, but body language, matlab your answer should support by your body language. That is I mean to convey. Right. And now we'll move on to Pranab sir. Sir, what do you feel about the body language part of the entire interview? Then, as Jens have already, he has already mentioned, Mhm. body language is equally important. That is a non-verbal part of the communication. Has basically two aspects. One is verbal and another is non-verbal. Verbal, whatever you want to express in words, and non-verbal, that is reflected through your gestures, through your expressions, through different type of hand movements or this thing. So these are the things which are reflective of your. So that reflects a lot many things. Your level of confidence, whether you are nervous or not nervous in this thing. Some people, they have some kind of obsessive nature. There is a frequent movement of hands or something like that. So that is also that always signifies that some kind of nervousness, as nervous feelings have crept into you at that. Sometimes people, they suddenly, while answering, they become blank for 4 or 5 minutes. That shows they have come out with a pre-scripted answer. They have just crammed those answers and they are not in a position to immediately react to that kind of, that continuity is missing somewhere. So these are some of the indications through which the panelists, they can judge whether you are nervous, whether you are in a position, whether you have got that, exhibit that leadership style, that sense of confidence, that sense of accommodativeness, that sense of receptiveness to people's other views. So these are some of the very important which are always reflected. It manifests in your different type of gestures, movements, your this thing. So that is also very important. As Jens has already rightly said, that the moment we call some candidate and he steps in to the boardroom or something like that, there the interview process starts, and the first impression, it lasts long. So that is the very initial part of your interview is always a non-verbal thing, not a verbal. We have not interacted with you. We see your movements, we see your gestures, we see your smiling face, and we can judge what type of personality. So that first impression is also very important. How you enter, how you greet the people, how you conduct yourself in that scenario. So that is very important. And plus, you have to maintain your poise always. That is, try to remain calm, and don't be very emotional. Sometimes people become very emotional. They get swayed away by emotions. That thing also you can make out. Sometimes people have frequent movement of hands or this thing. That is, there could be that it is always possible that sometimes we move hands. There is no, it is not that you are not expected to have a very rigid type of posture. That flexibility is always welcome. But that is also, but when it becomes repetitive, it becomes a kind of obsession, what you call obsession, then that is always has a very bad repercussion as far as interviews concerned. Right. Make out what type of persons you are. Similarly, suppose I try to provoke you. Some questions you have confidently answered, but I provoke you that nahi, aap jo bol rahe ho to theek nahi hai. This is not like that. So if you are confident enough, then very politely you must disagree, and otherwise you become, again, you see that nervousness is reflected in your face or expression. Right. So it's So, very important.
You have to- Unfortunately, we are absolutely at the end of the session because the time frame is over. That was given for this session. So I'd have to intervene here. And I would request Lalit sir to probably answer a separate question. अभी सर हम यहाँ पर बात कर रहे थे और आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला था एंड ट्रस्ट मी, कम से कम यूट्यूब में जब से टीचिंग कर रही हूँ तो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा सामने आता है और कई सारे स्टूडेंट्स अपने फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात पर डाल देते हैं कि इंटरव्यू में तो बहुत इंसिस्ट किया कि अंग्रेजी में बात करो, बट क्या इस बात में कोई भी वैलिडिटी है? क्या ये सही है कि वहां पर आपको अंग्रेजी और हिंदी के बेसिस पर जज करेंगे या आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर जज करेंगे? देखिए, वहां मैं जैसे पहले भी कहा, ये लैंग्वेज टेस्ट नहीं है। किस तरह से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप कर पाते हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी बात किस तरह से इफेक्टिवली कन्वे कर पाते हैं। इवन इंग्लिश में जैसे करते हैं तो बैंक में, अगर आपको मैं बताऊं कि बैंक में ज्वाइन करने के बाद में एक प्रेफर करते हैं लोग, हिंदी का एक एग्जाम भी होता है जिसके लिए उनको मॉनेटरी बेनिफिट, कुछ प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रिकॉग्निशन वो भी मिलता है। एक अलग से डिपार्टमेंट रहता है बैंक्स में, हिंदी राजभाषा विभाग बोलते हैं इसको। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलने में आपको वो इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। किस क्लैरिटी से, किस कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपनी बात कह पाते हैं, उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल में भी बताया गया कि वर्बल, नॉन वर्बल, हिंदी में अगर मैं बोलूं इसको तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कैसे दिखाना है और कैसे दिखना है। कैसे दिखाना है, आप कैसे कन्वे करेंगे वो आप दिखा पाएंगे जो कन्वे करके। कैसे दिखना है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ड्रेस सेंस, आप कैसे अंदर जाते हैं, ग्रीट करते हैं उनको, आपका आई कांटेक्ट क्या रहता है, वो कैसे दिखना है, उन चीजों में आता है। जी सर, तो आई थिंक यहाँ पर बहुत ही सटीक जवाब हमें एक बार फिर से बहुत ही ब्रीफ फॉर्म में मिल चुका है गाइस। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को जितने भी इलैबोरेट आंसर्स चाहिए आप बिल्कुल अपने इंटरव्यू बैच के अंदर हमारे पैनलिस्ट के साथ कनेक्ट करके वो जवाब ले सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे चारों के चारों पैनलिस्ट बहुत ही फॉर्मली और बिल्कुल परफेक्टली ड्रेस्ड अप हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार खुराना सर से इस बारे में पूछना चाहूंगी कि सर हमारे कुछ मेल एस्पिरेंट्स हैं और उनका क्वेश्चन है कि हमारा प्रॉपर गेटअप क्या होना चाहिए जब हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। देखो, गेटअप इज ए पार्ट ऑफ योर बॉडी अपीयरेंस, तो उसमें बहुत जरूरी है कि आपको ये दिखाना है कि यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर। आप जिस चीज के पोस्ट में जा रहे हैं उसको आपको दिखाना है कि यू आर कैपेबल ऑफ शोल्डरिंग दोस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइडियली स्पीकिंग कोट, आपको कोट और टाई पहननी है। अगर आपको टाई कन्वीनियंट नहीं है तो कोट जरूर पहनना है। और कलर भी जो उसका है वो फॉर्मल कलर होना चाहिए। इट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली ब्राइट रेड और ऑरेंज और समथिंग लाइक दैट। तो आपको बहुत ध्यान से अच्छा कोट पहनना है। और सिमिलरली लेडीज में भी आजकल बिजनेस ड्रेस है जैसे आपने पहना हुआ है। आई थिंक दिस इज आइडियल ड्रेस। और इन द एब्सेंस ऑफ दैट यू कैन हैव फॉर्मल साड़ी आल्सो, बट देन ड्रेस सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Ultimately, I will sum up like this. All my panelists have told you the very relevant and pertinent points. Ultimately, आपको दिखाना है कि you have the suitable enthusiasm, you have the passion, and you have to exhibit that you are the fittest candidate. You are going to be an asset to the organization. तो वो आपको within 15 minutes through your sharing of knowledge, through your communication, and through your personality exhibition has to be done. जिसको बोलते हैं ना मार्केटिंग में sell yourself. तो यू आर सेलिंग योर सेल्फ इन 15 मिनट्स। वो आपके पास 15 मिनट है, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पूरी, जिसको कहते हैं ना, हार्ट एंड सोल डाल के इंटरव्यू की तैयारी करनी है और उसमें ये सारी चीजें डालनी है। बाकी हम चारों जने आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक एक चीज पे एड्रेस करेंगे। इन द कोर्स ऑफ मॉक इंटरव्यू कोई पॉइंट्स निकलेंगे, वी विल गिव यू सुटेबल फीडबैक ताकि यू अल्टीमेटली प्रूव टू बी 100% कॉम्पिटेंट पर्सन टू हैंडल इट। थैंक यू। राइट सर। एंड दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि हमारे चार के चारों पैनलिस्ट्स यहाँ पर आप लोगों के साथ इतना डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं और अपना एफर्ट और टाइम आपके लिए लगा रहे हैं, तो आप इस बात को समझिए। दीज आर दोज पीपल जो कि उस सिचुएशन में रह चुके हैं, इन्होंने इस तरीके के मल्टीपल इंटरव्यूज को चेयर किया है, कंडक्ट करवाया है। सो दे हैव एग्जैक्टली द नॉलेज हाउ यू नीड टू present yourself, what all you need to be aware of, and what kind of a personality basically a suitable or fit candidate needs to have. अब जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, आप लोगों को सर मैं बता दूं कि हमारे कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा खुश हैं इस सेशन से, एंड देयर ऑल थैंकिंग ऑल ऑफ यू एंड दे सेइंग बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। एंड
दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सिंपल सी बात बता दूं कि आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 लेकर के आया है आप लोगों का अपना इंटरव्यू बैच। ठीक है, इंटरव्यू बैच आप लोगों को मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर, विच इज adda247.com. Unfortunately, I am not able to spot it at the moment, but I will try. And let us see in how long am I able to do that. Well, I'm not able to find it here. No, it's right here. If I wasn't blind, I would have seen it in the first go. I apologize. आप लोगों का जो IBPS PO का कंप्लीट इंटरव्यू बैच है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे सभी पैनलिस्ट्स के साथ साथ आशीष सर, वैभव सर और मैं उदिशा भी इस बैच में आप लोगों को गाइड करेंगे। आप लोगों के स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, आप लोगों के इंडस्ट्री रेलेवेंट नॉलेज के लिए, आप लोगों की पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर आपके साथ काम करने वाली है। मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगी कि हमारे पैनलिस्ट्स का कीमती वक्त दोबारा जब हमें मिलेगा तो एक और सेशन आप लोगों के साथ डेफिनेटली कंडक्ट करूंगी। लेकिन दोस्तों अगर आप 1-on-1 मॉक से लेकर के रेगुलर क्लासेस और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं हमारे पैनलिस्ट्स के साथ, तो प्लीज इस बैच को जरूर चेकआउट करिए। ये बैच अवेलेबल है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर भी और अड्डा 24/7 की वेबसाइट यानी adda247.com पर भी। इस बैच को परचेज करने के लिए अभी आप देख रहे हैं तो प्राइस इज अराउंड 7,999, लेकिन एज वी अंडरस्टैंड कि हमारे कैंडिडेट्स भाई अभी जॉब सीक कर रहे हैं, यानी उनको जॉब चाहिए, तो आप इसको और कम करवा सकते हैं। अपना कोड याद रख लीजिएगा दोस्तों, Y169 आपका कोड है और इस कोड को लगाते ही आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। द मोमेंट आप यहाँ पर टाइप करेंगे Y169 और अप्लाई करेंगे, जो चीज पहले आप लोगों को करीब 8,000 रुपए में मिल रही थी, अब आपको कंप्लीट इंटरव्यू बैच यहाँ पर मिल रहा है 1,839 रुपीज में। तो आप लोगों का कोड यही रहने वाला है। और अब मैं चाहूंगी कि यहाँ पर आप सब लोग अपने अपने फेवरेट मेंटर्स को थैंक यू बोल दें एक बार। एंड सर अगर आप लोग इजाजत दें तो अब हम सेशन को वाइंड अप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड योर प्रेजेंस। Thank you, all the best. Wish you all the Thank you. best. Thank you. Thank you. sir. Thank you. All the best. Thank you. So, sir. Okay, ठीक है। Done. Okay. Okay. Thank you. चलिए Okay, सर, sir. गुड नाइट। Good night. गुड नाइट।